So hello guys, with the name of God Ram Ram, we need 85 lakh rupees in our bank account. So for that, we need to solve the recent online assessment problem which was asked in Amazon for the SD2 role. It is a very difficult problem. Whenever you want to crack the online assessments of top tech companies, make sure you have the two skills ready with you. One is that you should be ready to read large English paragraphs like this. We have 8 to 9 images of this question. I have only put one pic because I am going to directly explain you what is the core understanding behind this programming problem. But this is a hard unseen DSA problem for which you need a FANGM level daily life DSA plus OA plus CP training. Okay, just doing standard sheets and standard easy standard LCGFG questions and popular DSA sheets is not enough. You need a constant practice of daily doing new problems. So by some fellow students it was written like this. They have explained the meaning easily. So basically they are saying that an array is given to you. The numbers in the array can be from 0 to 10 raised to 9. You have to rearrange the elements in any way you want. Once you have done that, variation of 0 plus variation of 1 plus variation of 2 plus variation of n minus 1 should be maximum. What is variation of I? Well, that is the difference, absolute difference between the maximum and minimum values among the first I plus 1 values. Okay, so let me try to you know uh, think about it with you. Okay. Yes sir. Okay, so let's use our interactive board. This was gifted to me by my student. His name is Shubham plus Pratyush. One of them gifted me. बात ये है कि वो दोनों मेरे स्टूडेंट ना एकदम सेम दिखते हैं और मैसेज भी एकदम सेम टाइप से करते हैं, तो मुझे दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता है. दोनों सेम एकदम एकदम पूरा हाइट बॉडी मुंह चेहरा, कंपनी भी सेम है, बस नाम अलग है. तो उन दोनों में से किसी एक ने मुझे ये गिफ्ट को दिया था, बट आई लव यू बोथ. ओके, डोंट वरी. So Pratyush Raghuvanshi plus Shubham, love you both. Now guys, you should also give me gift like them, okay? इसलिए मैंने उनकी मार्केटिंग की थी, समझे? हाँ. So now, guys, we have to solve this problem. So let's take an array. Let's say 1, 3, 4 is given to you. So guys, let's say that sir, I will not do anything, sir. I will just stay lazy and 1, 3, 4 is my answer, sir. Okay. So you have to calculate what? Once you decide your final array, you need to calculate V0 plus V1 plus V2. What is V0? V0 means you will only consider the this much part. So if you consider only the zeroth element, what is the maximum number here? 1. What is the minimum number here? 1. So what is 1 minus 1? 0. So V0 is 0. V1 means you will consider the first, you will consider all the numbers till index 1. What are all the numbers till index 1? It is 1 comma 3. So guys, if you consider 1 comma 3, what is the minimum of 1 comma 3 and what is the maximum of 1 comma 3? Can anyone tell me? What is the minimum of 1 comma 3 and what is the maximum of 1 comma 3? I want you guys to write the answer in the Google chat. So guys, you can start expressing your feelings about the minimum and maximum of 1 comma 3. What do you think? Min is 1, max is 3. Good. So minimum is 1 and maximum is 3. So what is the difference between 1 minus 3? Absolute difference is 2. So V1 is 2. Guys, you guys have to tell me what is the V2 value. I will not say this time. V2 means you will consider all the numbers of the array till index 2 and try to find max minus min till the index 2. I am so much interested in teaching you. मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है मालूम है? जो मैं कल परसों क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं ना, वो सोच के मेरा एंजॉयमेंट चल रहा है दिमाग में. पगला ही गया हूं. एनीवेज, गोइंग बैक टू द सेशन. सो गाइस, 0,1,2 कल परसों सच्ची में बहुत भयंकर क्वेश्चन है, ठीक है ना? मैंने सोच के रखा है क्या करना है. इट विल बी अ नाइस स्टोरी, ओके, एंड आई विल टेक यू डीप इनटू द स्टोरी लाइक Mikhail Tal chess reference. So 1,3,4 guys, please tell me in 1,3,4 what is max minus min? Write the answer in the Google chat. Let's see who knows the V2 value. 33333. Okay, good. Oh, Google Kakati is also there. Guys, you know one of our students' name is Google only. Give congratulations emojis. Direct from birth, directly Google. Great job. Now,
You need to crack Google Kakati. Need to respect your name. Do justice to it. Now, so V2 value is 3. So guys, what is the final answer? Final answer is 0 plus 2 plus 3. 5 is your variation. 5 is the sum of the variation. 5 is the sum of the variation. But guys, this is not the best sum of variation. They want the minimum sum of variation. They want minimum sum. They want you to rearrange the array in such a fashion so that this sum comes as minimum. Everyone write in the Google chat. Minimum sum, or write we want minimum sum, so that this concept is clear in your head that we want minimum sum. Guys, you understand we want minimum sum. So guys, can you tell me any other way to rearrange 134 such that the variation sum can come as minimum? Do you guys have any idea? How can I write 134 in some other order so that the sum becomes minimum? Not the sum of the array, sum of the variations. 431. Okay, 431. So students are saying 431. If we rearrange the array as 4, 3, 1, what will be the answer variation here? The V0 will be what? V0 will be 0. V1 will be what? The max minus min 1. Okay. Here it will be what? 1 minus 4, 3. Last value will always be the same because you are considering the full array, right? So 0 plus 1 plus 3, 4. Guys, the variation sum has come as 4. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my goodness. We are able to achieve a lesser sum than before. So guys, 431 is the best answer because it gives the minimum variation of 4. Can you reduce the answer less than 4? No. By the way, can I tell you interesting fact? Even 341 would give the similar answer. 341 is also correct. Why? Because 0, then plus 3, 4 variation 1, then plus 3 is also 4. Final output is 4. 4 is the minimum sum of variation you can achieve by optimally rearranging your array. So this is the problem given to you and you have to think about it. Okay. So guys, right? Yes, yes, clear, clear. If everything is clear and deep in your brain, there is no doubt in your life. So guys, how to approach these type of problems? So when I saw this problem, what happened is that, so one way is that I tell you the truth. Another way is that I fabricate it. So let's try the truth version. So the truth version is that when I saw this problem, for the first 5 minutes, I did not know anything. मुझे कुछ नहीं आया. मैं ऐसे ही इसको देखता रहा, ऐसा ऊपर से नीचे और मैंने ऐसा 134 ऐसा 10 5 बार लिखा, अपना सिर हिलाया और मुझे कुछ नहीं आया. फिर 5 मिनट के बाद मुझे सारा आंसर आ गया. नाउ वी विल से द सेम थिंग इन अ फैब्रिकेटेड वे. सो गाइज, व्हेन आई सॉ दिस प्रॉब्लम, for 2 minutes I went into deep thinking. I analyzed different constraints and then I got some analytical idea and I proceeded. तो इंटरव्यू में ऐसा बोलना होता है, समझे बात को? अपनी रियलिटी बाहर नहीं बताना है. क्लियर? रियल में वही है कि कुछ नहीं आ रहा था. ठीक है. अब so guys, how to approach? See, I will tell you. I will not tell you the answer, guys. Answer will come from your own brain because you are my student. So if a very big array is given to you, like 1 4 you know like this, 8 4 like 2 1, something like this is given to you. The first observation is what? First observation is this directly came in my brain, guys. You can also try to bring it in your brain. What if the question asked you, what if the question asked you to extract only two elements from the array? To extract only two elements from the array. Guys, what if the question asked you to extract only two elements from the array? Then what would you do? I am saying let's not solve for the whole array. Let's say you only want two elements. So guys, if you have two elements, then it's very simple, right? V0 will be 0 only because you're only considering the first element, and the second element V1 will be what? V1 will be absolute difference of first number minus second number.
So guys, in this array, which two numbers will you pick up? अगर आपको इस दुनिया में बोला होता कि you have to find sum of variations, but you only need two numbers. You need to select only two numbers. So which two numbers will you select? Write the answer in the Google chat. That solves the whole problem. Which two numbers would you select? 1 and 2. Can anyone tell me why? What concept is this leading to? This is leading to the concept that, sir, we should always sort the array. Why? Because, sir, when we sort the array, na, the difference of the adjacent elements is minimum. Difference of the adjacent elements is minimum. Difference of the adjacent elements is minimum. So we can take either these two elements or these two elements or these two elements if we only want to take two elements. Guys, react with emojis if you know this concept that when you have sorted the array, the adjacent differences become minimum. Even the sum of the adjacent differences is minimum. जब कोई भी तुमको कोई भयंकर array दे दे like 10, 100, 10, निकालो सबका adjacent difference क्या आ रहा है? 100 माइनस 10 क्या होता है? 90. 10 माइनस 100 क्या होता है? 90. 90 90 कितना होता है? 180. Can you see the adjacent sum is coming so high? But what if I want to minimize the adjacent sum? Let's say the question was just minimize the difference of adjacent sum. You will sort the array 10, 10, 100. Now see what happens. 10 minus 10, 0. 10 minus 100, 90. 0 plus 90. अरे सर आधा कम कर दिया. Yes, yes, yes. So the first observation of the problem is that if you have to solve the problem for only... So the first analysis is... First, we will reply to the student. Welcome, student. First observation is, what if we needed to extract only two elements from the given array? Then what you would do? Sort the array. We would just sort the array and check all the adjacent differences and pick the two elements, pick the two adjacent elements with minimum adjacent difference. All react with emojis if all are ready to solve my next question. I will give you an array and you have to tell me which two numbers will you pick up for the minimum variation sum. I am saying make the question easy. क्यों पूरे array के लिए solve कर रहे हो? एक एलिमेंट दो एलिमेंट के लिए करो ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? वैसे भी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, लगी पड़ी है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा करेंगे अपन, ठीक है? सो समय रॉय, तुम्हारा नाम देख के समय रहना ही मेरे दिमाग में चल रहा है. एनीवेज, फॉरगेटिंग चेस फॉर सम टाइम. नाउ गोइंग बैक. अच्छा, उसके साथ कुछ कांड हुआ था ना, याद करने दो. इंडियाज गॉट टैलेंट. ओके ओके, आई रिमेंबर. ओके, सो गाइस, लेट्स गेट बैक टू द मेन कन्वर्सेशन. So India has lots of talent, but you are not showing it. You are wasting it at wrong place. Okay, so focus here. Ram Ram. 2, 8, 2, 10, 100, 101. First, guys, tell me if you only have to extract two elements, which are those two elements which you will extract? Let's see the brain of the Kumar के students. Ram Ram. अपना दिमाग दिखाइए दुनिया को. 2, 2 कैसे पता चला? देखो, एक बंदे ने रॉन्ग लिखा है. 8 and 10 राहुल कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप ही सिर्फ गलत आंसर दे पाए इसका. कॉन्ग्रेचुलेशंस अमिताभ वॉइस. वाओ, ऑसम. 2, 2, 2, 2, 2, 2. हाँ, सही बात है. जब सिर्फ एक ही बंदा रॉन्ग आंसर दे रहा है तो वो भी तो ऑड मैन आउट हो गया ना, समझे? हाँ, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So guys, 2, 2 is the correct answer. What you will do? First you will sort the array 2, 2, 8, 10, 100 and 101. Now check the adjacent difference. इसका 0 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 90, इसका 1. सबसे कम किसका है? सबसे कम इन दोनों का है. तो 2, 2 को अपन ने पकड़ लिया. I have catch 2, 2. Now the V0, V1 will be so less. V0 will be what? This is index 0, index 1. V0 will be 0. And what will be V1? V1 will be these two numbers, mean minus max is 0, not 2 minus 2. 0. 0 plus 0, 0. Everyone write agree if everyone agrees with my mathematical theorem that
if you only want to find the answer of two elements, you should always take two elements from the sorted array which are closest to each other. अग्रीड सर लिखो अगर हर कोई मेरे मैथमेटिकल प्रूफ और थ्योरम से अग्री करता है. क्या आप अग्री करते हो? क्या आपको फीलिंग आ रही है इसके बारे में कि ये सही सच बात है? ये हाँ, आपको फीलिंग आ गई. तो फीलिंग हमेशा क्वेश्चन के लिए आनी चाहिए, लड़कियों के लिए नहीं. फीलिंग शुड बी फॉर द क्वेश्चन. क्या था? सॉर्ट किया, फिर एक एक का डिफरेंस निकाला. ये सब मिनिमम डिफरेंसेस थे भाई, ठीक है. इनमें जो सबसे छोटा आया वो लिखा, क्योंकि v0 तो जीरो ही आने वाला है, और ये क्या आने वाला है? फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, यही तो छोटा चाहिए ना, तो वो सबसे छोटा ये ऐसे ही आएगा ना. क्लियर? ऑल क्लियर गाइस? डेवलप फीलिंग्स फॉर द क्वेश्चन. राइट इन द गूगल चैट, फीलिंग्स फॉर द क्वेश्चन, नॉट फॉर योर क्रश. क्लियर? फीलिंग्स फॉर द क्वेश्चन गूगल चैट में लिखिए. फीलिंग्स आ गया आपको क्वेश्चन के लिए? फीलिंग, ठीक है, ग्रेट जॉब. अब दूसरा काम क्या करना है? अब गाइज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही आंसर बताओगे. तो दो एलिमेंट के लिए तो कर लिया, तो अभी दिमाग में क्या आना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए मुझे या क्या करना चाहिए? समझो तुम्हारा ही वो ही चल रहा है. हाँ, तुमको पता चल गया दो एलिमेंट के लिए ऐसे करना. अभी क्या दिमाग, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड? थिंक अबाउट इट, यूज योर ब्रेन, यू नो द आंसर. दूसरा क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए? कोई लिख ही नहीं रहा है. 1 3 5 6, अरे ले लो ना आदित्य शंदिलिया, कोई भी दो सबसे पास वाले, कोई भी ले लो. कौन से? 1 3 3 5 5 6 लेंगे इसके लिए. 5 6 का आंसर 1 आने वाला है, दो एलिमेंट ले रहे तो. डन यार. ओके, सो गाइज दिस इज द गूगल चैट. गाइज डॉक का लिंक दे दो कोई गूगल चैट में, नहीं तो मैं ही दे देता हूँ. सो गाइज आपको इतना तो दिमाग आ गया ना दैट वी हैव टू नाउ ट्राई फॉर द 3 एलिमेंट्स. राइट? यस सर, इन द गूगल चैट. अगर इतना कॉमन सेंस आपके अंदर है कि दो एलिमेंट के लिए सॉल्व कर लिया तो अभी 3 एलिमेंट के लिए करना है, 3 एलिमेंट के लिए कर लिया तो 4 एलिमेंट के लिए करना है, 5 एलिमेंट के लिए कर लिया तो 6 एलिमेंट के लिए करना है. दिमाग भगवान ने क्लियर कर दिया पूरा. सो गाइज यूजिंग द सेम कंसेप्ट, what if you want to extract the answer for 3 elements? What will you do? Sort the array and try all the subarrays of size 3 in optimal fashion. So guys, अब तुम बोलोगे कि अब अगर मैं ये डायरेक्ट ये चीज बोलता ना तो आपको नहीं पता चलता ऐसा क्यों है. बट बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड यू द आंसर फॉर 2, अब तुमको डाउट नहीं होएगा कि 3 एलिमेंट में भी सॉर्टेड ही रखना चाहिए. अब बाजू बाजू का डिफरेंस मिनिमम होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है. कुमार के सर ने झूठ नहीं बोला था, ठीक है. इफ यू वांट टू सॉल्व फॉर 3 एलिमेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर एंड लिसन टू देम, बट डू व्हाट इज राइट. So guys, where I was now in this question only, let's say 1 3 5 8 10. Guys, which 3 elements can we try? Like if I just wanted 3 elements, so which 3 elements can I try? Write in the Google chat which 3 elements I can try and quickly write it guys, time is running out. 1 3 5 and अरे सारे options लिखो ना. You can try 1 3 5, then you can try 3 5 8, then you can try 5 8 10. अरे सारी possibilities check करेंगे ना. दो वाले में भी तो सारे एडजेसेंट पेयर देखे थे, जो इनमें से बेस्ट था वो अपना आंसर था. दो में चेक करना बहुत इजी है, 3 में थोड़ा मेहनत लगता है. तो लिखो 1 3 5 3 5 8, दीज आर ऑल द पॉसिबल कैंडिडेट्स. अब बात को समझिए. आप अज्यूम करिए स्वयंवर चल रहा है और लड़की को बेस्ट दूल्हा ढूंढना है, ठीक है. तो ये सारे ही पॉसिबल कैंडिडेट्स है, ठीक है. 1 3 5 ये भी आंसर हो सकता है. 3 5 8, हाँ हाँ सर ये भी आंसर हो सकता है. एंड 5 8 10, हाँ हाँ सर ये भी आंसर हो सकता है. ऑल रिएक्ट विद लव इमोजी इफ ऑल अग्रीज की तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है. हमको सब ट्राई करना पड़ेगा. क्यों मैं इतना आराम से खुल के तुमको इतना सब ट्राई करने को बोल पा रहा हूँ? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मुझे टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था इधर एन की वैल्यू 2000 लिखी है. मतलब बाबू भैया कुछ तो गेम चलने वाला है. सो इट मींस यू कैन डू व्हाटएवर द हेक यू वांट. एन इज वेरी स्मॉल. ओके, सो नाउ लेट्स से यू वांट टू ट्राई 1 3 5. तो ज्यादा खुश मत हो जाना कि सर 1 3 5 सर आई कैन डायरेक्टली ट्राई इट सर. नो, 1 3 5 को भी ट्राई करने के मल्टीपल तरीके हैं बेटा जी.
whenever you select a subarray of size 3 na, there are multiple ways to solve it. First way is that in 1 3 5, first you will take 3 and 5. So if you take 3 and 5, what will be the variance? 0 plus or 2. Then you will add 1 at the back of 3 5. So it will become 1 minus 5 क्या होता है? 4. 5 minus 1 क्या होता है? 4. So 4 2 6 6 आंसर आएगा. ये एक पॉसिबल आंसर है. ठीक है. दूसरा पॉसिबल आंसर है कि 1 3 5 में 1 3 को पहले ले लेते हैं. 1 3 फिर चिपकाते ना आराम से 5 को. So if you take this as 1 3, इसका वेरिएंस क्या आता? लेट मी जस्ट चेक. इट वुड लाइक 2 1 का 0 आता और 1 5 का 4 आता. 2 plus 4 6. एक और वर्स्ट वे भी है. दैट वे यू नेवर नीड टू ट्राई. विच वे? कि 1 5 को सर पहले ले ले इसके अंदर, देन 3. ये मूर्खों वाला तरीका है. व्हाई इज दिस अ मूर्ख वे? बिकॉज 1 5 the difference will be what? 4 and this 0 plus 4 and this again 4, this is 8. Everyone react with love emojis if they understand कि अगर 3 वाला भी solve करना है तो 3 वाले को solve करने के दो ही तरीके हैं. Even if you want to solve for any subarray of size 3, there are only two options. Either you take the first two elements and then the third element, or you take the last two elements then the first element. Never try to take the first element and the last element and then the middle element. ऐसी मूर्खता हमको नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? Because you already know that the array is sorted. You can imagine it like A1 less than A2 less than A3. You can imagine it in your head, right? So it is always optimal to either take A2 comma A3 and then A1, or take A1 comma A2 then A3 for your minimum sum of variation. ये चोमुगिरी मत कर देना कि सर A1 A3 को पहले ले लिया. मतलब आगे और पीछे वाले को कभी भी बॉन्डिंग नहीं करना एक साथ. दे शुड नेवर बी पेयर्ड. दे शुड नेवर बी रीअरेंज्ड इन सच अ मैनर कि ये इससे जुड़ जाए फालतू का. वैसे नाटक नहीं चाहिए हमको भाई. क्योंकि इसको जोड़, इनको अगर पहले ही जोड़ दिया तो कितना बड़ा वेरिएशन आएगा. ये तो मिनिमम एलिमेंट था, ये मैक्सिमम एलिमेंट था. इसका वेरिएशन क्या आएगा? A3 माइनस A1. और इसका भी वेरिएशन A3 माइनस A1 ही आएगा क्योंकि A2 तो बीच वाला बंदा है. So what I'm trying to say is in this whole story is that whenever you're trying to solve for a subarray of size 3, there are only two options. Those two options are that you take the last two elements, calculate the answer, and then the first element you put at the end, or you take the first two elements, calculate the answer, and the last element in the last place. Never try to put the first element and the third element at the start, because that is bewkufi. Right? Yes sir, if these deep mathematical insights are getting clearer to you, अब धीरे धीरे आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन कौन से लेवल पे कहां जा रहा है धीरे धीरे. ठीक है. Okay, so this is proved and this is clear to you, right? Yeah, and the mathematical proof is also given. Aditya Shandela, you can see, but when you do it in this order, A3 minus A1 is coming two times, where A3 minus A1 is the biggest possible difference because A1, A2, A3 is sorted. बट यहाँ पर A1 माइनस A3 दो बार नहीं आ रहा है. यहाँ पर A1 माइनस A3 एक ही बार आ रहा है. और दूसरी बार क्या आ रहा था? A2 माइनस A3 एंड A1 माइनस A2. A2 माइनस A3 एंड A1 माइनस A2 बोथ आर स्मॉलर देन A3 माइनस A1. हाँ यस यस लिखो अगर ये सब समझ आ गया, या और प्रूफ दूं इसका. 3 सॉर्टेड नंबर्स का तुम समझ नहीं पा रहे हो तो गई 4 5 10 में क्या करोगे? हाँ ओके ठीक है. ओके गुड गुड गुड. सो गाइस हो गया ना सॉल्व. क्या करना था इसके लिए? 3 एलिमेंट्स के लिए क्या करना था? नथिंग. You just take 3 elements like this, try both the ways. Once done, now try for this subarray of size 3, this subarray of size 3. ऐसा करते करते चलते बनिए, ज्यादा मत सोचिए. All react with love emojis if this thing is clear to all of you. But guys, now you know, if you doing these things just gave you the insight, they did not give you the answer. For each subarray sorted of size 3, like B1, B2, B3, for each subarray sorted of size 3 like A1, A2, A3, there are two options. There are two best options. Always go with them. Always go with them.
Which are they? A1, A2 you keep at the start, and then you keep A3, or A2 comma A3 you keep at the start, then you go with A1. Okay. Just let me write it like this. Okay. Good, good, good. Now, guys, now you agree that we need to solve for, see, so many people. 60 people joined before, and now also there are 60 people since last 1 hour. It explains how much they are interested in it. इतना तो वो नेटफ्लिक्स देखते वक्त भी ध्यान नहीं दे रहे, इधर 80 लाख का बात चल रहा है तो पूरा आंखें गड़ी हुई है अंदर. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अभी हमको 4 एलिमेंट्स के लिए करना है, बट शांति रखिए, आपको इतना मैथमेटिकल प्रूफ दिखा दिया. नाउ वी विल यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सीधे डीपी लगाने का. इट इज कॉल्ड इन रशिया इट इज कॉल्ड एज सब एरे मिक्स्ड डीपी. सब एरे mixed DP. A very lovely Russian person taught it. I saw him in CodeChef blogs 5 to 6 years ago. He used to call it as subarray mixed DP. I also call it like that only. So what we do is that we do dynamic programming on subarrays. For each subarray, we will calculate the answer. So guys, DPIJ we should give us the answer for what? DPIJ should give us minimum sum of variation if your array was only from index I to index j. Everyone write in the Google chat. If you are trying to, all these observations now make us simple to define our DP. DPIJ is what? Best answer to the question if you consider the sorted array. देख रहे हो, हलवा क्वेश्चन नहीं है. डीपी लगाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डीपी सिर्फ सॉर्टेड एरे पे ही लगा सकते हैं. कैसे पता चलेगा वो बात आपको तभी पता चलेगी जब आपने 2-3 एलिमेंट का करके देखा, तो आपको पता चला कि 3 एलिमेंट के लिए सारे सारे के सारे 3 साइज एरेस सब एरेस चेक किए जो सॉर्टेड थे. 2 एलिमेंट्स के लिए मैंने सारे 2 साइज सब एरेस चेक किए जो सारे सॉर्टेड थे. मतलब डीपी भी लगाना है तो सॉर्टेड में लगाना, उसी में बेस्ट आंसर आएगा. React with emojis if this concept is clear to you, that even if you're applying dynamic programming, because of all the mathematical observations before, it's clear that it should be applied only on the sorted array. Clear, guys? So guys, DP I to J means best answer to the question if you consider the sorted array from I to J, because the whole array is sorted, so I to J is also sorted. So guys, now it's child's play for the Kumar के students. Like very easy, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है इन लोग के लिए. Let's say the sorted stuff is given to you like this. Okay, this is I and this is J. So guys, you have to calculate DPIJ. How will you calculate? What will be the formula to calculate the answer of this much part? I don't know. Whenever you don't know the answer in dynamic programming, you know now, first always create that 1D DP array. First step. And if more requirements are there, 2D DP array. Then define the meaning. Then try to solve for small cases. Then finally the answer is DP 1 to n, right? Final answer क्या होगा? Final answer will be DP 1 to n, ना, the answer for the whole array from 1 to n. React with emojis अगर पता है, final answer will be DP 1 to n. This can only be done if you have done my prerequisite course. Whoever has not done my prerequisite course, na, they are not going to understand what I am saying from this point. You need to open this prerequisite course up and you need to complete the dynamic programming course till session number 5. जिसने भी मेहनत नहीं की है, दुख दर्द और पीड़ा के लिए तैयार हो जाइए अब. ठीक है? So now don't worry, तो भी मैं ट्राई करूंगा, जिसको नहीं आता कुछ भी उसको भी समझ आ जाए. So guys, ये तो मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, मैं आईजे को छोटा बना लूंगा. Guys, now can you calculate DPIJ? ये अभी भी रोना आ रहा है. Can you now tell me the formula of DPIJ if I only consider 2 elements? Let's see which Kumar K student is able to tell the formula in the Google chat. Let's say I is this and J is the next index only. What is the formula of DPIJ in this case? And let's say this is the array B. Google chat में मुझे impress करने का काम चालू कीजिए.
डीपीआईजे का फॉर्मूला क्या होगा अगर आई ये वाला इंडेक्स और जे ये वाला इंडेक्स, अरे आंखों के सामने दिख रहा है, इसका सम ऑफ वेरिएशन क्या आएगा, 0 प्लस बीजे माइनस बी आई। इसका सम ऑफ वेरिएंट क्या आएगा, 0, और इन दोनों का सम ऑफ वेरिएंट क्या आएगा, 100 माइनस 8 बीजे माइनस बी आई। आता है ना इतना कोडिंग, मेरा विश्वास कम मत करो खुद पर। हाँ हाँ, so my trust you should not decrease with the trust which I have on you. So it's bj minus bi. It's bj minus bi, guys, because this is sorted array na, the bj will always be greater than bi. So guys, everyone write yes sir if everyone agrees, like first of all write yes sir if everyone agrees that the final answer will be dp1 of n, means best answer if you consider the array from index 1 to index n. I am considering one based indexing. राइट यस सर इन द गूगल चैट। जल्दी 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 आगे चलना इसके बाद जल्दी। ठीक है चलो, अब these things are clear to you, so you are enjoying it, I am also enjoying it, right? Yes sir, clear? Okay, so now dp of I comma, like what is the answer for all the subarrays of size 2? It is nothing but b of I plus 1 minus b of I. अरे सर ये तो बच्चों वाली बात कर दी आपने। हाँ बच्चों वाली बात करनी पड़ती है। So the j is nothing but what? J is I plus 1 ना। In this case beta ji, j is nothing but I plus 1 na. If this is you consider as I, this is I plus 1, and this is array b, so dp of I plus 1 is nothing but, no one is going to teach you like this with full energy and power, because they lack the love for the subject and student. So unless other Kumar K gets born, enjoy with me. dpi comma I plus 1 is bi plus 1 minus b of I. हाँ सर मुझे इतना आ गया सर, बहुत मजा आया। अब क्या करना है guys? I have learned how to calculate dp I comma I plus 1, so now I should learn to calculate which dp. Can you guys tell me in the Google chat? I know how to calculate dp I comma I plus 1. I know dp I comma I is nothing but 0. अगर एक ही नंबर लेंगे तो sum of variant 0 आने वाला है, and if I take two numbers, I know it is first number 0, then plus bi plus minus b of I plus 1 minus bi. Now guys, subarray of size 3, we need to learn how to calculate dp of I plus 2. dp of I comma I plus 2. अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। ऑल रिएक्ट विद इमोजीज इफ ऑल आर रेडी टू कैलकुलेट दिस गाय। तो चलिए पहले आपकी लाइफ थोड़ा इंटरेस्टिंग करता हूं। क्या है, बहुत बोरिंग हो चुका है आपका जिंदगी में। तो चलिए इनको इंडेक्स दे देते गाइस, 1 2 3। जल्दी बोलो dp 2 3 क्या है? व्हाट इज द बेस्ट आंसर इफ यू टेक टू एलिमेंट्स एट इंडेक्स 2 and 3? 100 माइनस 8 कितना होता है, भूल गए क्या? बच्चों ने पढ़ाया था, 92. You cannot do this, ask for refund to your first year standard teacher and the senior junior kg teacher. Bring that money back to me. I will teach you in the Kumar K program how to do 100 minus 8. Don't worry. So only after you pay me the money of that also from your past teacher. dp23 is 92. Jokes apart, what is dp12? Let's see who answers it. dp12 क्या है? dp12 is nothing but the best answer if you consider the subarray of size 2 where the first two elements are there. So guys, what is the answer? I'm waiting for you. Please write in the Google chat. It is 3. Okay, good. So dp12 is 3. Now guys, dp13 बताने के पहले आहिस्ता आहिस्ता, you know ना, Kumar K sir told you only two best ways are there when you need 3 elements. कुमार के सर ने बोला था जब 3 साइज एरे का बेस्ट आंसर निकालना है तो 2 ही ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि ये 2 नंबर को पहले कंसीडर करो, मतलब 5,8 को पहले कंसीडर करो, फिर 100 को कंसीडर करो। So what is the best answer for 5,8? This you already know. This is nothing but dp of 1,2 plus, when this number will also come 5, 800, what will be the difference? Difference will be last element minus the smallest element, because this is sorted na. So last element is the biggest, first one is the smallest. Wow, wow, wow. So dp13 is nothing but dp12 plus b3 minus b1. dp13 is nothing but dp12 plus
last element minus first element, because it is sorted. I know last is the biggest, first is the smallest. Kumar K sir told one way is you rearrange the sorted array in such a way that the first two smallest elements are at the start. दूसरा वे सर ने कौन सा बताया था? The other best way is that you take these two elements at the start, 8 and 100, and then you take 5. So guys, 8 and 100 एक साथ लेंगे तो इसका आंसर क्या है? 8 और 100 को एक साथ लेते तो इसका आंसर क्या है? DP23. Oh my god, DP23. We have found the final answer. DP23 plus 8, 100 का तो मैंने आंसर निकाल लिया. अब मैं 5 लास्ट में डालने वाला हूं. तो 5 जब लास्ट में डालते हो तो फर्क ही नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि पूरा एरे कंसीडर हो रहा है. पूरे एरे का मीन माइनस मैक्स तो हमेशा B1 माइनस B3 होता है ना यार. वाओ मैन, वाओ. So this is again B3 minus B1 only. So guys, only two options and minimum of both of them is the answer. So you have to start writing, reacting with love emojis and brilliant, brilliant, brilliant. If things have finally been clear in your head. DPI, comma J is nothing but minimum of these two options. One option is DPI to J minus 1, whatever is the best answer of the first part. And then the last element which you add, which creates BJ minus BI, comma dp of I plus 1 to j plus bj minus bi. Guys, like this you will calculate first answers of all the subarrays of size 1, then size 2, then size 3, size 4, size 5, size 6, size 7, size 8, 9, 10 till n, and then dp of 1n will be your final answer. dp13 का फॉर्मूला कितना ब्रिलियंट है. If you did not have the earlier mathematical insight, you would not be able to do it for dp13, and same can be applied to dp14 using the previous mathematical formulas. So dp13 is what? 5, 8, 100, 1, 2, 3. So dp13 is, one way Kumar K sir taught is take the first two elements like this. So I take first two elements 5, 8, and then I take 100. This is how I rearrange. Then what is the best answer of 5, 8? It is nothing but dp12 plus, when you join 5, 800, what is the mean variation? What is the variation? 100 minus 5, which is b3 minus b1. Another option is what Kumar K sir taught you the second best way is to take 8, 100 in the start. So I take this part of the array in the start. Then you should take 5. So if you take 8, 100, the answer is what? dp23 plus 8, 100, 5. What is mean minus max? Mean minus max will be 100 minus 5. 100 minus 5 is nothing but b3 minus b1. कितना अच्छे से आंसर निकल के आ रहा है. dp23 is nothing but min of, like, resubstituting the values. मुझे पता है बहुत लोगों को मजा आ गया है. So guys, how will you write the code? It's very simple. For dpij, you need to know dpij minus 1 and this in advance. You will obviously calculate it in advance because this is a subarray of smaller size, na? So first you will iterate for the subarrays of size 1, then size 2, then size 3, then size 4. You know, सबसे मजेदार बात क्या है? Same concept can be applied even if there are 4 elements, beta. Let's take C1, C2, C3, C4. Okay. Or yeah. Let's say this is 2, 3, 4, 5. If you are calculating dp14, you know what is the best way? The best way is always whatever is the best way to rearrange 2, 3, 4. Whatever is the best way to rearrange 2, 3, 4. After that, you will put 5 in that sequence.
Another best way is what? Whatever is the best way to arrange 3, 4, 5. After that, you will put 2 in the sequence. What was the best way to arrange 2, 3, 4 in your life? Sir, the best way to arrange. Can you see how deep this problem is? You need to have perfect mathematical insight for it. Okay, perfect. The best answer for 2, 3, 4 is nothing but what? DP 13, which you have already calculated in the past. And this is nothing but the difference between the first number and the last number, right? C4 minus C1. This is again C4 minus C1. But this is what? This is 3, 4, 5. What is the best way to rearrange 3, 4, 5? It is DP 23. DP 24, sorry. If you consider index 1, 2, 3, 4 like this. Okay. So guys, right? Yes, sir. Great, sir. Brilliant, sir. If your brain has opened up and you have really enjoyed this problem. इसमें बहुत कुछ चल रहा है. मजाक नहीं चल रहा है. याद रखना. ये प्रूव करना ही मुश्किल था कि जैसा 3 एलिमेंट्स के लिए चल रहा है वैसे ही 4 एलिमेंट्स के लिए भी चलेगा. Yes, yes, Aditya Shandilia. We only went to the optimal ones, Aditya. This type of problems used to be asked a lot in the Google Code Jam years back. Okay, so after explanation, it became easy. Yes, yes, yes. So, guys, will you be able to write the code for it? Like I'm repeating it one more time. So, what you will do is that the thing is, yeah. Now, how did I come to know about this? So, first I saw the constraints. So, automatically it was hitting in my brain that I have to do n square dp. In n square dp, the most popular thing is this only, ना. समझे? आई वर्कड इट बैकवर्ड्स. मैंने कैसे सॉल्व किया मैं बता देता हूँ. देखो, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है दिमाग में, मैं वो बता रहा हूँ. आंसर आने के बाद तो कोई भी समझ सकता है. देखो क्या हो रहा था ना, दो जगह से मेरा दिमाग चल रहा था. देखो, एक जगह से मेरा दिमाग क्या बोल रहा था कि एरे सॉर्ट करना है, 2 एलिमेंट का 3 एलिमेंट का ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा. दूसरी जगह से दिमाग कब से बोल रहा था मिक्स्ड डीपी क्योंकि एन की वैल्यू 2000 है. फिर जब ये दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्व हो जाता है. That's how the actual problem solving happens in the human brain, which the teachers don't teach. आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए. फिर जब ये दोनों बातें बार बार सोचोगे तो जुड़ जाएंगे और आंसर आ जाएगा. React with emojis if all these things are clear to you, fully clear in your brain, and you can also deduce like this. Clear? Okay, right? Yes, sir. In the Google chat, if you guys will be able to write code, guys, promise me ना, you will be able to write. If you don't know the prerequisite course GP का करना, फिर ये करना. Clear? Okay. Okay. You Vivek Divakar, you can surely try greedy, but obviously I cannot give you the example where it fails. With my correct code, which I will be putting in the document, you can tell AI to generate many test cases, and obviously it will start failing. Okay, why it will fail? Because of the n value. You can see if they wanted greedy solution, तो n का value 2000 नहीं देते. इतना तो दिमाग हमको भी लगाना चाहिए ना. एन का वैल्यू 2000 मजे में थोड़ी ना दे रहा है. जब ऐसे ही सॉल्व हो जाना तो एन का वैल्यू 10:5 नहीं देता वो. हाँ, सोचो सोचो तो दिमाग लगाओ. So Vivek Divakar, obviously the greedy is wrong, but we can, like, generating test case takes time. So I will request you to tell ChatGPT to generate test cases for you and run it in our correct code and your code. So one case you will surely find where it fails. Till then, everyone react with emojis and write yes sir, yes sir, yes sir in the Google chat if all these basic things are clear. Okay, great, great. Yes, because now the session is over, Aditya. Okay, so Ram Ram, guys.